वेलकम एवरीवन इन टुडेज सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड टर्म्स, कुछ प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिशनर्स। आज हमारा पहला वर्ड है इंटर्निस्ट। इंटर्निस्ट इज अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर अ डॉक्टर, अ स्पेशलिस्ट who deals with the internal organs and systems of the body. An internist, who is also known as an internal medicine physician, is a doctor who specializes in the internal organs and systems of the body. They are trained to solve diagnostic problems, manage severe long term illnesses, and help patients with multiple कॉम्प्लेक्स क्रोनिक कंडीशंस। ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो अलग अलग डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एंड इंटरनल ऑर्गन्स के साथ वो डील करते हैं। Our next term in this series is gynecologist. Gynecologist is a specialist doctor who deals with the problems of women reproductive health. A gynecologist is a doctor who specializes in women's reproductive health. This term originated from gyne, a Greek term which means women, and logos means science. A gynecologist is a specialist who deals with medical problems of women. They diagnose and treat issues related to the female reproductive tract. महिलाओं से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती है, जो समस्याएं होती है, उनको सॉल्व करने का जो काम होता है वो होता है गायनेकोलॉजिस्ट का। इसके बाद में अगला टर्म जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्स्टेट्रिशियन। Obstetrician is a doctor who deals with pregnancy, childbirth, and female reproductive system. An obstetrician is a medical doctor who specializes in pregnancy, childbirth, and the female reproductive system. They also provide care during the preconception. बच्चा गर्भ में आने से पहले जो सिचुएशन होती है, जो कंडीशन होती है, उसे प्री कॉन्सेप्शन कहा जाता है। And postpartum periods, obstetricians are also known as OBGYNs. हमारा अगला टर्म है इस सेशन में पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन ये जो वर्ड है, इसमें पेडिया में ये जो वर्ड है, पार्ट है इस वर्ड का, ये ग्रीक रूट से बना है। ग्रीक रूट है पेडियोस। पेडियोस मीन्स चाइल्ड, Iatria means medical healing, and ICIAN means an expert. Pediatrician is an expert doctor, a specialist doctor who deals with the medical healing of children. A medical doctor who specializes in the health of children is called a pediatrician. They provide care for children from birth until they are 18 or 21 years of old. Pediatricians are trained to diagnose and treat a wide range of childhood illnesses. They also provide preventive health maintenance and ongoing monitoring for healthy children. जो बच्चे होते हैं जिनका जन्म होने से 18 से 21 साल की उम्र तक, ऐसे सारे बच्चों की देखभाल करना, उनकी सारी इलनेसेस को ट्रीट करना, ये जो काम होता है ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है पेडियाट्रिशियन। इसके बाद में अगला टर्म है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, इसमें जो रूट वर्ड है डर्मा मीन्स स्किन एंड लोगोस मीन्स साइंस। डर्मेटोलॉजी इज़ अ साइंस विच डील्स विद द स्किन प्रॉब्लम्स। जो स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं होती है उनका जो निदान किया जाता है, उन पे जो इलाज किया जाता है वो काम होता है डर्मेटोलॉजिस्ट का। डर्मेटोलॉजिस्ट इज़ अ मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन स्किन, हेयर एंड नेल कंडीशंस is called a dermatologist. They can also treat disorders of the mucous membranes and wet areas of the mouth and genitalia. Dermatologists can diagnose, treat, and manage more than 3,000 skin conditions. They can also help with cosmetic issues like hair loss and scars. So dermatologist के बारे में कई सारी चीज़ें हैं।
इसके बाद में अगला टर्म है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, OPHTHALMOLOGIST। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये जो टर्म ओरिजिनेट हुआ है ये ग्रीक रूट से ओरिजिनेट हुआ है और ग्रीक रूट वर्ड है ऑप्थेल्मोस। ऑप्थेल्मोस मीन्स विजन, आई साइट, and ophthalmologist is a specialist, is a medical doctor who specializes in eye and vision care. They are also sometimes called eye doctors or eye surgeons. The next in this today's session is orthopedist. Orthopedist is a specialist doctor who deals with problems of bones. An orthopedist is a medical doctor who specializes in diagnosing and treating diseases and injuries that affect the musculoskeletal system. This includes bones, muscles, joints, ligaments, nerves, and tendons. Orthopedists are also known as orthopedic doctors, orthopedic physicians, or orthopedic surgeons. इसके बाद में अगला टर्म है कार्डियोलॉजिस्ट। A cardiologist is a doctor who specializes in the cardiovascular system, which includes the heart and blood vessels. They can treat or help prevent several cardiovascular problems. जो हार्ट से जुड़ी हुई समस्या होती है उनका जो इलाज किया जाता है वो होता है कार्डियोलॉजिस्ट। अगला टर्म है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट ये जो वर्ड है ये ग्रीक रूट न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन मीन्स नर्व्स और जो नर्वस सिस्टम है। न्यूरोलॉजिस्ट इज अ मेडिकल डॉक्टर who diagnoses and treats disorders of the brain and nervous system. They specialize in conditions that affect the brain, spinal cord, and nerves. Neurologists may also treat muscle diseases and disorders that affect thinking and behavior. And the last word for today is psychiatrist. Psychiatrist is a medical doctor who specializes in the treatment of mental health disorders. जो मानसिक बीमारियां होती है उनका जो इलाज करता है वो होता है साइकियाट्रिस्ट। They are trained to diagnose, treat, and prevent mental, emotional, and behavioral disorders. Psychiatrists can also prescribe medications to treat mental health issues. That's all for now. Thank you. Have a nice day.